Dear students, I'm going to present to you a very interesting example of the computation of probabilities in that situation where we have a random vector consisting of two continuous random variables. So the example is as follows. Suppose that the random vector xy is such that x is going from minus infinity to plus infinity, and y is also going from minus infinity to plus infinity. Now, let us define a few events. Let A1 represent the event that x is less than or equal to 2 and y is less than or equal to 4. Similarly, A2 is the event that x is less than or equal to 2 and y is less than or equal to 1. A3 represents the event that x is less than 0 and y is less than 4. By the way, if I say less than or less than equal to, आप जानते हैं कि continuous case में it doesn't matter. और इसके बाद एक और A4. A4 is the event that x is less than or equal to 0 and y is less than or equal to 1. अब ये सारे हमने events define कर दिए. Also, suppose that we are aware of the probabilities of these events. And we know that the probability of A1 is 7 by 8. The probability of A2 is 4 by 8. The probability of A3 is 3 by 8. And the probability of A4 is 2 by 8. ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं. For some reason, we are interested in finding the probability of the event A5, where A5 is defined as the event where x lies between 0 and 2 and y lies between 1 and 4. तो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे इवेंट्स भी हैं और सब कुछ है, बट वी डू नॉट हैव एनी पीडीएफ. आमतौर पे तो ये होता है ना कि एक पीडीएफ हमें गिवन होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है कि फॉर एग्जांपल द बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन यहाँ पे आप देखें कि देयर इज नो पीडीएफ. हाउएवर, all this information is available, and given this information, we are interested in finding this particular probability that x lies between 0 and 2 and y lies between 1 and 4. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. I would like to give you a hint. The hint is as follows. बात ये है स्टूडेंट्स कि चाहे पीडीएफ अवेलेबल है चाहे नहीं अवेलेबल है, ये तो हम जानते हैं ना कि इट इज अ रैंडम वेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स. सो देन it is obvious that any probability involving both x and y will be obtained by finding the double integral. The double integral of f of xy with respect to x and with respect to y. तो अब ये तो खैर एक बेसिक बात थी, लेकिन जो हिंट मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमें अवेलेबल हैं वो हम इंटीग्रल्स की फॉर्म में लिखने के बाद वी विल बी स्प्लिटिंग द इंटीग्रल्स अकॉर्डिंग एज वी हैव द इंफॉर्मेशन, एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू डिटरमिन दैट पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. So let us begin. सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि probability of A1 is equal to 7 by 8
All right, so let us write it in the form of the double integral. The probability of A1, in other words, 7 by 8 is equal to the integral from minus infinity to 2, and then the second integral from minus infinity to 4, f of xy dy dx. अब ये मैंने क्या लिखा है? यही लिखा है ना कि जो वहाँ पे वो इवेंट की जो डेफिनेशन है वही लिखी है. इवेंट की डेफिनेशन क्या थी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2. तो जाहिर है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू 2 करेंगे x के हिसाब से तो दैट इज फुलफिलिंग दिस थिंग. और दूसरा क्या था उसी के साथ, दैट y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4. तो फिर वो जो सेकेंड इंटीग्रल है जो y के हिसाब से है उसमें अगर आप लिख रहे हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 4 तो जाहिर है कि वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है. अब फिर वही वाली बात मैं रिपीट करती हूँ कि वो जो एफ ऑफ एक्स वाई बीच में लिखा हुआ है वो तो एक जनरल नोटेशन है फॉर अ बाइवेरिएट डेंसिटी फंक्शन. उसको मैं इंटीग्रेट तो कर नहीं सकती ना इस तरीके से कि कोई एक्चुअल कोई फॉर्मूला होता तो मैं कैलकुलस के रूल्स अप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर लेती. हाउएवर एक चीज़ हम करेंगे और वो ये कि जो हमें और चीज़ें दी गई हैं उसके मुताबिक वी कैन सी दैट वी कैन स्प्लिट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल एज फॉलोज. द इंटीग्रल can be written as another integral, double integral, which goes from minus infinity to 2 with respect to x, same as before, and it goes from minus infinity to 1, not 4, but 1 with respect to y, and then that same expression plus. अब ये splitting का concept यही है ना कि एक integral जो था उसको आप दो हिस्सों में तोड़ते हैं और प्लस आता है उनके बीच में. सो ये जो मैंने कहा ये प्लस द इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेम एज बिफोर, एंड देन द सेकेंड इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4, द वन विच इज विद रिस्पेक्ट टू वाई. यानी सारी बात का जिस्ट ये है कि चूंकि ये डबल इंटीग्रल वाली सिचुएशन है तो जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस मैं कर रही हूँ I'm not splitting here that integral which is with respect to x, but I am splitting that integral which is with respect to y. बात यह है कि इस बात पे वापस आते हैं ना कि हमने निकालना क्या था. हमने जो निकालना चाहते हैं उसको दोबारा देख लें. The probability of the event A5, where A5 is what? That x goes from 0 to 2 and y goes from 1 to 4. तो आपने देखा कि जो मैंने अभी स्प्लिट किया तो y वाला जो इंटीग्रल है सेकंड वो जा रहा है फ्रॉम 1 to 4. सो वी आर गेटिंग क्लोजर टू व्हाट वी वांट. इसके बाद लेट अस कंसिडर द सेकंड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A2 इज इक्वल टू 4 by 8. और इसको अगर हम उस तरह लिखें इंटीग्रल के फॉर्म में, सो दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 2, दैट इज द वन विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके साथ ही नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू 1, दैट इज द वन विच इज विद रिस्पेक्ट टू y. आगे वही f of x y dy dx. चलिए ये हुआ. तो अब आपने नोट किया कि ये जो अभी आपने लिखा दैट इज एक्चुअली द first one on the right hand side of the above equation. ये जो अभी मैंने स्प्लिटिंग की थी उसमें जो स्प्लिट करने के बाद राइट साइड पे जो पहली वाला चीज है, isn't it exactly the same? Of course it is exactly the same. So therefore combining these two, what do we get? We get probability of A1 is equal to probability of A2 plus the integral from minus infinity to 2 and the integral from 1 to 4 f of xy dy dx. अब अगर आप वो उनकी वैल्यूज पुट कर दें, probability of A1 और probability of A2 की वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा? 7 by 8
is equal to 4 by 8 plus the integral from minus infinity to 2, the integral from 1 to 4, f of xy dx. तो अब जाहिर है कि अगर आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस कर दें तो 7 by 8 minus 4 by 8 is 3 by 8. तो ये वो जो ये वाला इंटीग्रल है that is equal to 3 by 8. This particular probability, the probability of this particular event, although this is not yet the one that we are wanting, क्योंकि इसमें y तो 1 to 4 चला गया है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो x है अभी it is going from minus infinity to 2, जबकि जो मैं चाहती हूँ उसमें क्या है कि it should be going from 0 to 2. अब इसके लिए look at the next piece of information that we have. हमें बता दिया गया है कि probability of A3 is equal to 3 by 8. तो probability of A3 को कैसे लिखेंगे? वो उसकी जो फॉर्म है उसको देख लें. उसके तहत what do we write? We write minus infinity to 0, ये x के हिसाब से, and then minus infinity to 4, ये y के हिसाब से. All right, so we have probability of A3 equal to this thing equal to 3 by 8. तो ये तो हो गया. Students, I would like you to look at probability of A1 once again. Probability of A1 is the integral from minus infinity to 2 as far as x is concerned, and from minus infinity to 4 as far as y is concerned. पहले हमने इसको स्प्लिट किया था y के हिसाब से, अब मैं इसको स्प्लिट करने लगी हूँ x के हिसाब से. ये जो पहला वाला है minus infinity to 2, it can be splitted as minus infinity to 0 plus 0 to 2. तो अगर हम इस तरह लिखें तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? We can write probability of A1, which is also, we know, equal to 7 by 8. It is equal to the integral from minus infinity to 0, and the second one from minus infinity to 4, f of xy dy dx, plus the integral from 0 to 2, and the second one minus infinity to 4, f of xy dy dx. तो आपने देखा कि अब हमने स्प्लिटिंग और तरह से की, पहले हमने स्प्लिटिंग और तरह से की थी. अब जो हमने स्प्लिटिंग की है उसमें आप देखिए कि ये जो राइट साइड पे पहली टर्म है, that is exactly the probability of A3. Therefore, we get another equation just like we had previously. Now we have another equation. And what is that? We can say that probability of A1 is equal to probability of A3 plus the integral from 0 to 2 as far as x is concerned, and from minus infinity to 4 as far as y is concerned. और फिर अगर नंबर उनकी जो वैल्यूज हैं वो वहाँ पे पुट कर दें तो 7 by 8 is equal to 3 by 8 plus this integral. उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी. We have utilized 3 pieces of information that we had available with us, but we have not yet looked at the 4th piece of information. What is that one? That is the probability of A4. And according to what is written there, in the integral form, we can write it as the integral from minus infinity to 0 as far as x is concerned, and the integral from minus infinity to 1 as far as y is concerned. तो अब देखिए जैसे मैंने पहले रैशनल आपके सामने रखा उसी तरह की लॉजिक के तहत इस इंफॉर्मेशन के जो अब बताई इसकी वजह से we get yet another equation. And what is that one? It is that the probability of A3 is equal to the probability of A4 plus the integral from minus infinity to 0, the integral from 1 to 4,
f of xy dy dx. तो आपने देखा कि काफ़ी सारी इक्वेशंस डेवलप हो गई हैं स्प्लिटिंग के प्रोसेस के थ्रू. अब हमें अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे जो हम चाहते हैं. So let's see how do we proceed. Let me define a new event and let me call it A6. And in integral form, I would like to write it as the integral from minus infinity to 2, the integral from 1 to 4, f of xy dy dx. And I can, because of the previous equations, I can see that it is equal to, this probability is equal to 7 by 8 minus 4 by 8 is equal to 3 by 8. यानी वो जो मैं पहले कह ही चुकी हूँ, अब मैं उसको explicitly आपके सामने रख रही हूँ. ये आपकी आ गई probability of A6, यानी इस particular event को हम A6 कह देते हैं. इसी तरह we can have probability of A7, which is represented by that particular integral which we got from another one of those three equations. और वो क्या है? That it is the integral from 0 to 2 minus infinity to 4 f of xy dy dx. So that is equal to 7 by 8 minus 3 by 8, and that is equal to 4 by 8. And then the third one, let me call it probability of A8, eighth event, और वो भी इसी तरह जैसे अभी किया. So now what do we have? It is the integral from minus infinity to 0, and then the next integral from 1 to 4, f of xy dy dx. And what is this equal to? Because of the previous equation, it is equal to 3 by 8 minus 2 by 8, and that is equal to 1 by 8. अब हमने ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल थी उसको यूटिलाइज कर लिया है. अब इसके बाद we have to use our common sense and our mathematical sense in order to obtain that probability which I am actually wanting. That is the probability of the event A5, which can be expressed as the integral from 0 to 2 as far as x is concerned, the integral from 1 to 4 as far as y is concerned. अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें कि पहले तो मैं प्लस कर रही थी और अब मैं एक सब्ट्रैक्शन करने लगी हूँ. This particular integral can be written as the integral from minus infinity to 2 as far as x is concerned, and the integral from 1 to 4 as far as y is concerned, and then that expression minus the integral from minus infinity to 0 as far as x is concerned, and the integral from 1 to 4 as far as y is concerned. और जब मैं ये सब्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दीजिए. So we write that it is equal to 3 by 8 minus 1 by 8, which is equal to 2 by 8, which is equal to 1 by 4. So that's it. We have obtained the required probability. I'm sure that you're getting confused. कि minus कैसे हो गया? All you have to do, my dear students, is to take this thing which I have subtracted to the other side और फिर देखें कि वो जो प्लस के हिसाब से क्या वो सही है. अगर आपको लगे कि वो सही है तो then everything is fine.